Assalam alaikum. Morning, Salam. Why so late? Sir, my phone charging was so low, sir, so I had to search for a charger. Okay, so today the class is based on problems on beta and gamma function. So before moving to this Okay, class, we have a small revision of beta and gamma function properties. So here I am writing what we have done in before classes, yesterday's class or before classes. First of all, definition of beta function here. Beta function. What is the definition of beta function? Beta sir, function is denoted beta by of n comma n is equals to integral 0 to 1 x power n minus 1 into 1 minus x power n minus 1 good, dx. x power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 into d, where n and m both are positive. M and n should be positive. That is very important. And we have 3-4 properties in that one. And now gamma function. Gamma function. Again, what is the definition of gamma function? Integral 0 to infinity Gamma n is equal to. gamma n is equals to integral 0 to infinity This is the definite e power integral 0 to infinity e power minus x, e power minus x x to the uh, power of into x power n minus 1 dx. d. This is our gamma function. And we have the relation also between them. Relation. Relation between gamma and beta function. We have already proved yesterday. This one also. Beta Yes, sir. m gamma n M is comma equal n to what we have proved. is equals to Gamma m into gamma n gamma into gamma gamma n n by gamma gamma m plus n. m n m We plus have n. proved this property, very important property. Now some questions are there. I am choosing random questions. Question number 1. We can't say that it is completely based on beta or based on gamma. You can see the question. क्वेश्चन में है आपको evaluate integral 0 to 1 x to the power of m into 1 minus x whole to the power of 10 into d. And here the answer is 1 by 396. Sometimes it is given to prove, sometimes directly given. Now, first question, my question is, which property is related to this problem? Look at, we have beta function definition, we have gamma function definition, we have relation between them. After problem, किससे related दिख रहा हूँ? Beta से related है sir. Beta m comma n. Hello. Now, tell me which one? Beta function now. Let us assume that I is equal to integral 0 to 1 integral 0 to 1 x power 5 into 1 minus x whole power 10. यहाँ पे छोटे से कितने जोड़ेंगे? x पावर 3 आना चाहिए. यहाँ पर भी x पावर 3 आना है. ओके, x पावर 3 है.
दूसरा प्रॉब्लम x क्यूब आना है इसका, ठीक 1 है। माइनस एक्स क्यूब पावर 10 आना है सर वहाँ हाँ, पे। 1 - x³ आना है यहाँ पे, राइटिंग मिस्टेक हो गई। So this is 1 - x³ whole to the power of 10. This is the question like that into 10. Correct? So now this problem is completely related to beta function. So we have to go for some substitution here. सब प्रॉब्लम में सब प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन जरूर आएगा। तो ये दोनों एक्स पावर के वैल्यूज में विच वन इज द लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू इज x power 3, no? That x power 3 will be taken as y. X power 3, if you take x power 3 is equal to y, this implies what is this x become? 3 will go that side, becomes y power 1/3. Correct? Now let us Yes sir. differentiate. Differentiation means differentiation of x is dx. Differentiation of x power dx n formula is n x power n minus 1. y power 1/3 minus 1 is minus 2/3, and because we are differentiating, dy will come. Okay. Now you see dy. the question limits Yes sir. are 0 to 1. In our beta function also we have limit 0 to 1. It means no change in limit. अगर आप करना भी चाह रहे तो Yes sir. lower limit x की place पे if you put to 0, you will get y 0. In upper limit in place of x put 1, you will get y value is 1. So there is no change in limit. Okay. अगर आप अप्लाई भी करें तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आए। इंटीग्रल 0 to 1 नहीं x value. What is x value? Power 3. X power x value what x value is y power 1/3, right? This is yes sir. x power 5 can be written as x value is y power 1/3. So it is y power 1/3 whole to the power of 5 into 1 minus x cube. X cube value is y here. X cube value is already y here. Whole to the power of 10. y Okay, into dx value we got it as 1/3 y to the power of minus 2/3 minus 2/3 into d. Now take this 1/3, which is a constant term. You can pull out of this integral. 1/3 will be outside. Integral 0 to 1. Y power 1/3 whole power 5 becomes y power 5/3 into 1 minus y whole to the power of 10 also as it is. 1/3 already we have taken outside. Y power minus 2/3 into d. Correct? Any doubt? yes sir. No sir. Any doubt? Okay. We merge these two. These two means when the bases are equal, power should Power be. 10 So when add the power, what happens? 5/3 minus 2/3 is 3/3 means 1. Correct? yes sir. 5/3 minus 2/3. If you use the calculator, 3 is the LCM. 5 minus 3 is again. 5 minus 2 is again, 3/3 is 1. So 3 by 3 1. y is equals to I is equals to this 1/3 is there outside, let it be outside only. 0 to 1 is there, let it be as it is. So y power कितना होता है? 5/3 minus 2/3 is 1. 5 1 power 1 into y 1 into minus 1 10, minus y power 10 10 into what's here? dy. dy. करेक्ट। अभी भी ये परफेक्टली बीटा गामा फंक्शन में सेट नहीं हो रहा। अब देखेंगे एक और स्टेप। जी y I is equal to 1/3 integral 0 to 1 y to the power of 1 can be written as 2 minus 1 now. yes sir. 10 can be written as 11 9 minus 1. minus 1 हाँ, 9 minus 11 1 10 minus 1 होता। नहीं होता। ऐसा इंजीनियरिंग कर रहे बाबा आप। 11 minus 1 is 10. Now perfectly look at these two. Look at these two. Here in yes place sir. of x we have variable y. So y there is no problem at all about the variable. M value is what here? Just tell me. What is M m value? value is
Come on. M value is 2, sir. So beta of m value is 2. And what is n value? N value is 11. Yes, exactly. So this is beta of 2 comma 11 value. बीटा ऑफ 2 कामा 11 वैल्यू लाने के लिए अपन रिलेशन के पास जाएंगे. m value is 2, n value is 11. Now put here, this is 1 by 3. If m value is 2 means gamma of 2. Now n value is 11 means gamma of 11 divided by gamma of what? 2 plus 11, which is equal to I is equal to 1 by 3 into. We have some properties in gamma function. You remember? गामा फंक्शन की अगर आप प्रॉपर्टीज आपको अगर याद है तो अपने पास ये भी एक प्रॉपर्टी है. देखिए, गामा ऑफ n plus 1, gamma of n plus 1 is equals to n gamma n, which is also equal to n factorial. Second property of gamma function, remember? Yes, sir. So this gamma of 2 can be written as 1 plus 1, which is equal to 1 factorial. मतलब gamma of 2 की वैल्यू अपन चाहे तो 1 factorial लिख सकते हैं ना. Gamma of 11 means 10 factorial. Gamma of 13 means कितना factorial? 12 factorial. इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बोलिए. कैलकुलेटर है ना आपके पास? 1 factorial तो 1 ही होगा. Someone tell me the answer of this. 1 by 3 into 10 factorial by 12 factorial. एक सेकंड सर कर रहा हूँ. एक सेकंड में बाबा करो. अल्लाह अकबर. सर 3628 नहीं नहीं 800 नहीं नहीं 10 का नहीं है नहीं. सर ये. अरे क्या है 10 बाबा? फैक्टोरियल का है सर ये. अरे नहीं आता जी वैसा. पूरा कैलकुलेट करो बाबा. अरे भाई 1 by 3 इंटू अच्छा. 10 फैक्टोरियल बाय ओके 12 सर. फैक्टोरियल पूरा करो बोला मैं आपको. आप एक एक ओके आंसर सर. बोले तो कैसा होता? 1/3. कितना टाइम? एक सेकंड. 1/3 1/396 आ रहा था. करेक्ट. पूरा कैलकुलेट करने के लिए बोला मैं. जी. दिस इज करेक्ट. 1 by 396 is the correct answer. So like that we can calculate the problem. We can do the problem based on this beta and gamma function. So let us take ओके one few more questions now. Next page. The question है. The question is prove that. The question में prove that है. जरूरी तो नहीं है कि prove that कभी रहना चाहिए या evaluate ज्यादातर रहेंगे. 0 to infinite e power minus x square into dx. The question famous भी है. This is root pi by 2. Integral 0 to infinity e power minus x square dx is equal to pi by 2. Root pi by 2 is the answer.
अब आप बोलिए, आप किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड? लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट स्टेप इज I is gamma properties. equals to 0 to infinity. How can you say? Because 0 to the limits infinity are, as a e power minus x. yes, exactly, e power minus infinity. Sorry, 0 to infinity limits means it is completely related to gamma function only. So whatever it is, देखेंगे बाद में. Put we have a substitution. कल की क्लास आपको याद है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, e पावर जेड स्क्वायर वाला केस आया था, आपको याद है? हाँ सर. हाँ, तो यहाँ पर e पावर एक्स हाँ स्क्वायर वाला केस है. देखो मैं क्या बोला था आपको, अब इसको अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, e पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स हाँ स्क्वायर, ऐसा नहीं. हाँ. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कल भी बोला था मैं, आपको याद है x. ना? हाँ स्पेशल सर, x सब्स्टिट्यूशन square से is सॉल्व equals करना to. पड़ता. पुट एक्स स्क्वायर इज हाँ. इक्वल टू टी, ठीक. टू एक्स डी एक्स, डिफरेंसेस इन. सर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लेना सर, इधर नहीं माइनस नहीं, साइन माइनस की क्वेश्चन में. जरूरत, माइनस को नहीं लेना, माइनस को नहीं लेना, माइनस अच्छा. को रहने देना है वहां पर. डी एक्स इज इक्वल टू ठीक है सर. डी टी बाई टू एक्स. ठीक. और यस. और क्या करना है, क्वेश्चन को, आंसर को देखना, लिमिट्स अगर सेम है तो फिर अपने को लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. गामा फंक्शन के डेफिनेशन में लिमिट सेम है ना, हाँ सर. तो लिमिट चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं. वेरी गुड. हाँ, चलिए, अब तो ये तो हो गया डीएक्स का सब्स्टिट्यूशन. एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप ले लिए टी ले लिए, ठीक है. अब ये वैल्यूज को मैं ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ. आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, because we are not going to change their limit, e power minus as it is, x square will be taken as t here, dx value is what, dt by dt by 2x. 2x. Now this is I is equal to 0 to infinity. Okay, we'll do one thing. 1 by 2 is a constant, we can take out integral 0 to infinity e to the power of minus t as it is. Okay. Now with 1 by 2 outside, 1 by x is left here. 1 by x, Yes sir. 1 by x into dt. But I want to find out this value of x, then only we can substitute. If x square is equal to t, then what about x X is equals to root t. root t? If x is equal to root t, though, we can replace here 1 by root t now. 1 by root t. Yes sir. So just replace it now. प्रॉब्लम इजी रहते हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ करने का नहीं रहता. खाली आपको क्या होना चाहिए, Yes. आपका बेसिक सही रहना Integration. चाहिए. बीटा और गामा फंक्शन के जो डेफिनेशन के वैल्यूज है ना, वो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, बस खत्म. आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, this is 1 by 2 outside, let it be outside only. This is 0 to infinity as it is. Okay, e power minus t, e power minus, what is the value of t? Is x square. Huh? Hmm. E power minus t, okay, minus t only. Substitution is correct ना. So 1 by x value is root Root of t. t into d. रूट ऑफ टी को न्यूमरेटर में ले जाके टी पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं. t आई इज power minus इक्वल 1 टू by 2. 1 बाई Yes sir. 0 to infinity t to the power of minus t as it is. This can be written as t to the power of, root means power 1/2, if you brings to the numerator becomes power minus 1/2 into dt. This is equals to, I is equals to 1/2 into integral 0 to infinity e to the power of minus t as it is. T power minus half can be written as, ऐसा लिख सकते हैं, हाफ को माइनस हाफ को 1/2 minus 1. Can we write like this? Minus Okay. 1/2 minus 1 minus 1/2 is minus 1/2. Minus 1 again, minus 1 by 2. Yes sir. Why? Because we know, once again I am writing for your convenience only, 0 to infinity e power minus x, 0 to x e to the power power of minus x n into minus 1 dx value is n minus 1 dx. gamma n.
right? It is the definition of gamma n. Okay, now look at Yes, वेरिएबल sir. तो कुछ भी हो सकता, t हो सकता, x हो सकता, y हो सकता, whatever. N value is what? Tell me. N value is 1 by 2, sir. Exactly, we required that one. I is equals to this 1 by 2, which is the constant term outside only. This is gamma of 1 by 2. आपको याद होगा गामा फंक्शन 1 by रिलेशन प्रूव करने के बाद एक प्रॉपर्टी अपन प्रूव करे थे, गामा ऑफ 1 by 2 वैल्यू इज रूट पाई. root pi. Yes, sir. Finally the answer is root pi by 2, which is our required answer, Okay, sir. right? Now next question. अब प्रैक्टिस कर लीजिए प्रॉब्लम की भी अच्छे से. कल भी एक मैक्सिमम अगर पॉसिबल हो तो कल एक क्लास ले लेके बीटा गामा फंक्शन इज ओवर. ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. आप आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर हेलो. लो. अब तक आ रही थी ना, अभी नहीं आ रही? बीच में कट हो रही थी सर आवाज. आपका नेटवर्क इशू होगा, आपकी आवाज में तो क्लियर आ रही. ओके सर. क्या बोल रहे थे सर आप? अब ये प्रॉब्लम तो आज और कल थोड़े करके खत्म कर देना, बीटा गामा फंक्शन खत्म. अच्छा. ठीक है, ठीक है सर. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज ओवर, बीटा गामा फंक्शन इज आल्सो ओवर. ओके सर. माइनस एक्स स्क्वायर dx is equals to we have to prove here is root pi by 4. ये टीचर ने. हाँ चलिए, अभी ये क्वेश्चन को जैसा अभी करें अपन, ये क्वेश्चन को ई पावर माइनस स्क्वायर वाले क्वेश्चन को, इसको भी वैसे ही करना है, आसानी से आंसर आ जाए. लेट अस अज्यूम दैट I is equal to integral 0 to infinity e to the power x square into e power minus x square dx. Same substitution like the previous question. Put x square is equal to t. Put x square is equal to t, which means that x value is root t, X is correct? equals to root t. Root of t. And if you differentiate, this is 2x 2x dx is equals dx to is equal to dt, dt. which means dx is that equals to dx value is dt by 2x. yes, dt by 2x. Now if So you put this consider value, I I is is equal equals to to 0 to infinity 0 to root t infinity, power square x e square is power t, e power minus x square is again minus root t, t. dx value is dt by 2 into again x value is root t, correct? Correct. 0 to infinity, what happened? Hello, hello, Yes hello. sir. Yes sir. आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा, देखिए. This t can be Yes sir. written as root of t into root of t. Root of t into root of t together becomes root of t whole square. Square and root cancel means t only. We are arranging that value of t as root of t into root of t. Why? Because I want to cancel these two terms. That is why we are arranging that. Next, डिस्टर्बेंस हो रहा आपकी तरफ से, देखो आप. Now look at this is I is equals to integral 0 to infinity. Here I am rearranging. E power minus t will be e power minus t only, and into root of t. Root of t can be written as t power 1 by 2 into dt. और ये 1 by 2 इसका जो है वो बाहर आ जाए, राइट?
I is equals to, this is 1 by 2 integral 0 to infinity e power minus t, again t power 1 by 2, like we have arranged here, t power minus half, t power half को अरेंज करना बहुत आसान रहता, कैसे अरेंज करते हैं आप? t power half को we write it as 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1 is 1 by 2 into dt. Now if you compare with our definition, this one, variable is x, variable is t, nothing will happen. Tell me what is the answer of this one now. Come on. What is the Sir, answer of this? 1 by 2 into Gamma 3 gamma by 2. 3 by 2. What is the value of gamma 3 by 2? How to simplify that? I think we have shown this one. मैं कई बार बता चुका हूँ उसको. 1 by 2 into root 5. 1 by 2, है ना? 1 by एक 2 एक root कम 5. करते जाना. Yes, sir. तो ये 1 by 2 into 1 by 2 becomes I is equals to 1 by 4 root 5. root 5. That is our answer. Root 5 by Yes, sir. 4 is I the is answer we equals have to to prove. root 5 by 4. सर यहाँ पे आप रूट थ्री मल्टीप्लाई करें ना सर, वो जरा फिर से एक्सप्लेन करिए ना सर, वहाँ पे कनेक्शन रूट थ्री चलेगा का अपन रूट थ्री का मल्टीप्लाई करें. नीचे ये रूट ऑफ यहाँ पे। टी. हाँ If t हाँ can be सर। written as, this t can be written as root of t into root of a. ऐसा लिख सकते हैं ना, t को अपन a can be written अच्छा as रूट रूट। a root of a into root of a we can write now, because यस सर। root of a is nothing but root of a whole square now. यस सर। Square and root स्क्वायर स्क्वायर cancel, just कैंसिल। a only. We are arranging यस सर। this t as root ओके। of t into root of रूट t, टू। because I want to cancel this denominator. अच्छा That's what we have to rearrange. Okay, ओके सर। ठीक है. तो कल की क्लास के लिए जी अपन सर। थोड़ा सा गैप दे देंगे, कल की क्लास को कंप्लीट करने के लिए. कल भी एक हाफ एन आवर की क्लास अगर रखें. अभी तो स्टूडेंट कोई भी आज आए नहीं, पता नहीं क्या है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द इशू. एक काम करेंगे, एक और एक क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कर लेंगे, टाइम है. ओके सर। प्रूव दैट, प्रूव दैट एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई बाय साइन एन पाई, साइन एन पाई. ये क्वेश्चन का, इसका कुछ रिलेशन, जो ऑलरेडी आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक पढ़ रहे हैं ना जी आप, सर। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जी सर। 0 टू इंफिनिटी एक्स पावर n minus 1 by 1 plus x, 1 plus x dx value is actually pi by sin n pi, sin n pi. अब तो मेरा बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर तो इसको आप एज ए फार्मूला ही याद रखिए, ये m2 की क्लास के लिए. अच्छा बट अगर इसका प्रूफ आपको मिलना है, तो आपको इसका प्रूफ मिलेगा. जो जो स्टूडेंट मेरी बेटा। रिकॉर्डिंग बाद में सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर, एक्चुअली इसका जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज देयर फॉर IT स्टूडेंट. It is second year, second semester, complex integration, complex analysis is the name of the paper, which is comes under M3. There we have a proof of this. CSC स्टूडेंट्स के लिए भी 2-2 में है, AIDS स्टूडेंट के लिए 2-1 में है, और JNTU स्टूडेंट के लिए M4 में है. इसका प्रूफ है. बट राइट नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम we have to memorize this one as a formula. Understood? यस सर। Now, directly solution. We know that we know that by relation between beta and gamma function, beta m comma n value is, what is that value? Gamma m into
gamma n divided by गामा एन gamma इंटू गामा एन बाई गामा gamma एन m प्लस plus n. This is already we know from the beta and gamma function relation. Take this is equation number one. And already we also know that by the second property of beta function, as you remember, beta m comma n value is integral 0 to infinity x to the power of n minus 1 x to the power of n minus 1 divided by 1 plus x whole to the power of m plus n into dx. ये भी अपन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना? जी सर। ये अब ये दोनों प्रॉपर्टीज को अगर अपन मर्ज करें, ये रिलेशन है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है. इफ यू वांट टू मर्ज दिस टू फ्रॉम 1 and 2, what do you say? From equation number 1 and 2, both of them are beta values, means this is also same. Gamma m into gamma n divided by gamma m plus n is equals to integral 0 to infinite 0 to infinite x power n minus 1 divided by 1 plus x whole to the power of m plus n into d. Now again we have to go for a special substitution. Like you see, n तो यहाँ पे n है, न्यूमरेटर में है, चलेगा. m की प्लेस पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. What type of substitution? Put m is equals to, चलेंगे सब्स्टिट्यूशन बोले, m is equal to क्या प्रूव करना है? 1/1 माइनस n, है ना? गामा n तो गामा n है ही. डिफरेंस कहाँ पर आ रहा? m की वैल्यू क्या हो जा रही? 1 माइनस n हो रही एन ना? वन माइनस एन। यस This सर। implies that minus, if you bring that side, it means m plus n value is 1. एन प्लस एन Okay, इज ऑल्सो वन। we are putting these values in equation number 3. m is equal to 1 minus n and m plus 1 की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा गामा, पहले से n है वहां पर आने दीजिए, m we are getting as 1 minus n वन divided by माइनस एन। gamma of m plus n value is 1 is equal to integral 0 to infinity x power n minus 1 will be there, n minus 1 here रहने दीजिए, divided by 1 plus x whole to the power of m plus n. m plus is 1 now, 1 into d. वन एक्स। ये 1 को अगर आप नहीं भी लिखे तो चलेगा. And this is what finally gamma n into gamma 1 minus n and divided by gamma 1 value is already 1 by gamma function definition properties, first property, है ना? यस सर। Is यस सर। equals to, now look at 0 to infinity x power 1 x power n minus 1 into 1 plus x dx की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? पाई बाई साइन n पाई, है ना? डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर. पाई बाई। ओके सर। डायरेक्ट आंसर मैं क्या बोला अभी? इसका फ्रॉम प्रूफ अपने पास फ्रॉम द फर्स्ट ईयर में नहीं है. इसका प्रूफ आपको ओके सेकेंड ईयर सर। थर्ड ईयर में गए बाद पता चलेगा. हाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई साइन इन पाई. मैं आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कहीं जरूरत पड़ेगी, कंटोर इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, वो टॉपिक, ओके। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये कैसा पाई बाई साइन इन पाई हो रहा. अभी तो फर्स्ट ईयर की हद तक तो उसको जरूरत नहीं है. फर्स्ट ईयर की हद तक तो आप उसको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए तो भी बस है. ठीक है सर। ठीक है, ये विल एंड ऑफ दिस क्लास. और कुछ ओके सर। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉब्लम की अगर जरूरत पड़ी है तो कल करके. आई थिंक फ्रॉम मंडे वी डोंट हैव एनी आफ्टरनून क्लास बिकॉज बीटा एंड गामा फंक्शन विल बी completed. Tomorrow we'll see one more class, same time or ओके 11:30 like that. Then we have to finish this ओके one. बीटा गामा फंक्शन ऑलरेडी लैपलेस तो हो गया है, तो आपको फर्स्ट ईयर में जब भी मल्टीपल इंटीग्रल्स रहेंगे तब मैं आपको बुला लूंगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कंटिन्यू करें. ठीक है ठीक है ना? तो बीटा गामा फंक्शन की क्लास को कल खत्म करेंगे. थैंक यू. विल स्टॉप द क्लास. सर। वो लैपलास के चल रहे जब आपने हाँ, मैं आपको लिंक भेजा दूंगा. ठीक है सर।